administration of the country, that how different policies will be made, how the different matters will be run in the country. Okay? So the general administration and the supervision of the country is done by the government. That is by the executive. Then executing legislative functions. जो laws बनाए हैं, पहला तो general supervision of the country को कैसे चलाया जाएगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. देन जो लॉज बने हैं बाय लेजिस्लेचर उनको इंप्लीमेंट कराया जाएगा, उनको इन्फोर्स कराया जाएगा बाय द गवर्नमेंट. थर्ड, परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शंस. So some judicial functions at their own level, not जो दूसरी हमारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उनके functions नहीं, but general judicial functions inside the government bodies. That is the power with the executive. Then regulating the wealth of the nation, to distribute and to generally regulate, supervise the distribution of the wealth in the entire nation. And lastly, making different decisions. It is a general administrative body जो country को supervise करती है, the government of the country. I hope all of you know what are the functions of the government: to administer, to supervise, to take decisions, to make policies. Right? So these are some of the functions of executive. Now ये तो हो गए general functions. But हमें हर टॉपिक में क्या देखना है, हाउ इट इज लिंक्ड टू द बिजनेस. सो जैसे मैंने आपको बताया लेजिस्लेचर में जो मैंने आपको कुछ लॉज बताए, these are the laws which are made specifically for the businesses. So now we will link here that how government is linked to the business, that what government has to give to the business and what government gets from the business. दोनों का give and take स्टडी करेंगे गवर्नमेंट और बिजनेस का आपस में. तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द बिजनेस रिस्पांसिबिलिटीज टू द गवर्नमेंट. बिजनेस की क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, फिर देखेंगे गवर्नमेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स द बिजनेस. बिकॉज अल्टीमेटली तो हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे हैं कि कैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेस को इफेक्ट करता है. सो हम दोनों में रिलेशनशिप देखेंगे कि पहले देखेंगे बिजनेस कैसे गवर्नमेंट, बिजनेस की क्या रिस्पांसिबिलिटीज है गवर्नमेंट की. फर्स्ट, वेरी फर्स्ट इज टैक्स पेमेंट. Businesses earn profits और profits के ऊपर tax देना पड़ता है. So this is the first responsibility of the business, that is to make tax payment to the government on timely basis. Second, voluntary programs. All of you might have heard about corporate governance or CSR, corporate social responsibility. That means the responsibility of the businesses towards the society. Like businesses, they earn so much amount of profits, and it is a responsibility कि business जो profits earn कर रहा है वो society के resources को use करके कर रहा है. So business की भी responsibility बनती है to return back something to the society. That is corporate social responsibility. So it has been made mandatory from the last many years. There is some limit which I am forgetting कि अगर companies उस limit से ज़्यादा profit earn करती हैं, they have to spend 2% of their profits on CSR. This law has been made that अगर कंपनी में कुछ लिमिट है उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, they have to spend some percentage of their profits on the society. So that is, ये तो एक legal requirement है, but otherwise भी companies, if they wish to be successful in the long run, if they want to be sustainable मतलब development in the long run, so they have to give back something to the society in terms of education programs, charity, हेल्थ अवेयरनेस, जेंडर सेंसिटाइजेशन. इस तरीके से वो सोसाइटी को कुछ रिटर्न बैक कर सकते हैं. These are some of the voluntary programs which are done by the businesses for the society. और कई बार क्या होता है कि कई बार बिजनेसेस में if you are employed somewhere, ठीक है, तो आपकी सैलरी में से कुछ परसेंटेज काट लिया जाता है in terms of donations, in terms of NSS. ठीक है, so NSS में क्या, this is the government schemes, because उसमें national saving schemes, उसमें डायरेक्टली पैसा जो है आपकी सैलरी में से काट के उस स्कीम में डिपॉजिट करा दिया जाता है. So businesses की ये कुछ responsibilities हैं towards the society और towards the government. That is their voluntary. So उनकी मर्जी है if they want to do. और कईयों के ऊपर compulsion भी है. और companies earning huge amount of profits, they have to spend some percentage on the CSR. So this is their responsibility towards the society. Next is providing information. So the top business houses, they usually provide suggestions to the government. जब भी government की कोई नई policy आनी होती है, foreign policy, union budget आना होता है, so these top businesses, they provide information to the government to make them aware कि क्या उनके problems हैं, what are the facts, what is the state of development,
so that government उनकी problems के basis के ऊपर जो है policies बना सके. So it is the responsibility of the businesses to provide information to the government ताकि उस information के base पे government जो है policies बना सके which is in the interest of those businesses. Next is government contracts. All of you might have visited these toll areas, तो जहाँ पे टॉल लगे होते हैं, आप कभी जाते हो ट्रैवल करते हो, कभी आपको टॉल दिखता है कोई. So what are they? It is a responsibility of the government, but government उन जैसे roads construct करना, it is a responsibility of the government. But government क्या करती है, ये एक private party को contract आगे pass कर देती है. Government don't do all these things by themselves. They will delegate such contracts to the private businesses. So private businesses own contracts, roads को develop करते हैं, they charge toll from the people. Okay? So these are public-private partnerships, PPP जिनको कहते हैं. जहाँ पे government is public sector and the non-government are private sector. So जहाँ पे government private sector के साथ मिलके कोई infrastructure projects develop करती है. Okay? So यहाँ पे private sector को ही completely delegate करते हैं. So it is the responsibility of the businesses to take up these government contracts. Because government is not involved. From the last many years, government is denationalizing. Private sector is coming up more. Public sector अपने आप को बहुत restrict कर रहा है. So government is always delegating their contracts, their infrastructure related contracts to the private sector. So it is responsibility of the private sector to take up those contracts and to adhere to it. Next is government service. So government service means the private businesses, they can offer services to the government, okay, in terms of data, okay, or in terms of charity, in terms of donations. Then last is political activity. Now this is a very debatable point that ki jo hai businesses, they should be included in the politics or not. Okay. So different people have different opinions. So as a matter of one opinion, businesses, they have a responsibility to be included in the government, because अगर business का कोई representative government में include होगा तो they can present their interest in the government, in the rule making, in the law making, they can represent their interest. But on the other hand, okay, there is some other opposition view that businesses, they should not be included in the politics. So this is a debatable fact कि business politics में include होना चाहिए या नहीं. There's an example of two persons, G.D. Birla, he said that businesses, they should be included in the politics. Whereas another person named J.R.D. Tata, he said that businesses should not be included in the politics. So this is a debatable fact that business की responsibility है towards the politics or not. कि business के representatives politics में या leaders में include होने चाहिए या नहीं. So this is a debatable fact. Okay, so these are some of the responsibilities of business towards the government. Now let's study the other aspect, the responsibilities of the government towards the business. First is establishment and enforcement of laws. तो पहली responsibility है कि जो भी legislature में laws बने उनको enforce कराना चाहिए, उनको implement कराना. That is the first responsibility of the government towards the business. Second is maintenance of order. That means maintenance, that is proper supervision in the country. Maintenance of law and order, make laws and such that the law and order prevails in the country. That is the second responsibility of the government. Third is to provide money and credit. Although we have a number of private banks, but there are also public banks, there are also government sources, जो nation में businesses को money or credit provide करते हैं. So there are government bodies as well that provide, that supply money, that supply loans and credit to the businesses. So this is one of the function to provide money and credit to the businesses. Orderly growth. So orderly growth means to have a systematic growth, to curb regional imbalance. जैसे कई बार government क्या करती है, government businesses को incentives देती है अगर वो rural areas में industries establish करते हैं. क्यों देती है? Because they want businesses to establish their premises in the rural areas, ताकि rural areas की भी development हो, वहाँ के लोगों को jobs मिले, उस area की development हो. So government is in regional imbalances को दूर करने के लिए इन businesses को कुछ देर के लिए tax free कर देती है. So orderly growth, to have systematic growth ताकि हर area की equal growth हो.
That is one of the responsibilities. Another is to provide infrastructure. It is the responsibility of the government to develop infrastructure. चाहे वो financial infrastructure है या physical infrastructure है. So that is why all the big and strategic industries, they are in the hands of government. So it is the responsibility of the government. Although government उसको delegate कर देती है to the private sector, but it is the sole, it is the foremost responsibility of the government to develop infrastructure in the country. Then assistance to small industries. So as I told you, the small businesses here, they are not sometimes able to get loan from the banks because for banks that might not be that profitable. So for yes. Hello everyone. Okay, so मेरा नाम मनीष है. ठीक है, मैं अभी लास्ट सेमेस्टर यही बैठता होता था लास्ट ईयर. हालांकि हम कोविड की वजह से अपना सेशन बहुत अच्छे से पूरा नहीं कर पाए, हमने उसको ऑनलाइन पूरा किया. तो मैं जो आपसे जो है वो 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा कि आप सबके माइंड में एज ए स्टूडेंट एक क्वेश्चन आता होगा कि हमें कामयाब होना कैसे. हर कोई पहले तो कामयाब हर कोई होना चाहता है और हर किसी के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि कैसे, उसका रास्ता क्या है, कैसे होना है. तो रास्ता तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि हर एक के लिए वो एम अलग हो सकता है और हर एक के लिए उसका फिर एम के हिसाब से रास्ता भी अलग हो सकता है. लेकिन मैं आपको 3-4 कॉमन चीजें बता सकता हूँ क्या होती है वो. एक तो हार्डवर्क है, जो आप सबने सुना है. एक है पैशन, पैशन बहुत जरूरी है. ठीक है. एक है अवेयरनेस, अवेयर होना आपके लिए बहुत जरूरी है. अगर मैं हूँ जिस जगह पे मुझे पता है कि मेरी क्लास के जितने भी और स्टूडेंट थे वो शायद अगर वो इंटरव्यू देते तो मेरे से पहले शायद सेलेक्ट हो जाते, बट वो क्यों नहीं हुए, क्योंकि वो अवेयर नहीं थे वो. ठीक है. तो अवेयर होना बहुत जरूरी है. मतलब अवेयरनेस को मैं बताता हूँ, मतलब 10 में से 10 नंबर में अगर आप जस्ट अवेयर हो, आप कैसे भी हो, अगर आप अवेयर हो, बाकियों से ज्यादा अवेयर हो, आपको पता है वो चीज वहां मिल रही है तो आप जाके ले लोगे. दूसरे को पता ही नहीं है तो वो कहीं और घूम फिर के थक के हार के चला जाएगा. तो अवेयर होना बहुत जरूरी है. अवेयर कैसे हो गया, अवेयर कैसे हो गए? न्यूज़पेपर से, लोगों से, अपनी नेटवर्किंग से. एक मैं अभी सर को अभी बता रहा था कि हमें सबको लिंक्डइन, आप सब में कितने लोग लिंक्डइन पे हो? आप लोग, आप में से कोई है? आप हो? कोई नहीं है लिंक्डइन पे? आज ही आप सब लोग जो है अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ. ठीक है. जो मैं बता रहा था कि कामयाब होने के लिए क्या चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए. तो नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अवेयरनेस के लिए आपको घर बैठे तो अवेयरनेस नहीं आएगी. आप लोगों से मिलोगे, लोगों को जानोगे, आपको पता लगेगा कि वो दूसरा आदमी क्या कर रहा है, वो यहाँ तक कैसे पहुंचा है. तो आप लिंक्डइन पे सब हर कोई अपना अकाउंट बनाओ और मैं तो कहूँगा कि डेली आधा घंटा 1 घंटा उसको यूज करो. मैं पिछले अराउंड 7-8 ईयर से यूज कर रहा हूँ और मेरे अराउंड उस पर 7,000 के आसपास कनेक्शन हैं. तो वो एक बहुत बड़ा रीजन था मेरे सक्सेसफुल होने, क्योंकि मुझे चीजें पता ही वहां से लगती थी. अदरवाइज मैं जैसे बता रहा हूँ कि जो मेरी क्लास के बाकी बच्चे हैं उनकी तरह मुझे भी नहीं पता होगा. तो मुझे वहीं से पता लगता था कि ये लिंक्डइन पे ये जो है ऐसा कर रहे हैं, इन्होंने इससे पहले ये किया था, इन्होंने ये पढ़ाई करी थी, इन्होंने ये एग्जाम दिया था, तो मैं भी दे सकता हूँ. उसमें आप लोगों से बात कर सकते हो. इट्स सेम लाइक फेसबुक. ठीक है. बट वो प्रोफेशनली लोग उस पर प्रोफेशनल होते हैं, आपको अच्छे लोग मिलेंगे और वो उस पर मतलब सारी काम की और जॉब की और प्रोफेशनल्स की ही बातें होती है. तो आप सब अपना एक उस पर लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ. और एक चीज और बहुत जरूरी है, वो ये समझना कि मैं स्पेशल हूँ. ठीक है. माइक टाइसन का नाम सुना है सब? माइक टाइसन कहता है कि अगर आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा है तो आप खुद की तारीफ करो, या मैं स्पेशल हूँ. आप सब में से कुंग-फू पांडा कितने लोगों ने देखी है? आपने देखी है? और आपने देखी? बस आप लोग दोनों देखिए. आप सब इस वीकेंड पे कुंग-फू पांडा देखना. ठीक है. चाहे आप उसका डब वर्जन देख लेना, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको समझ आए देख लेना. उसमें वो उसका जो फादर होता है कुंग-फू पांडा, मतलब आप जब देखोगे तो पता लगेगा. तो उसका फादर एक नूडल सेलर होता है, नूडल बना के बेचता है. तो उसका फादर की दुकान बहुत चलती है. तो वो अपने बेटे को बताता है कि मैं स्पेशल नूडल बनाता हूँ इसलिए चलती है. उसका बेटा उससे जरूर पूछता रहता है कि आपकी दुकान बाकियों की नहीं चलती, आपकी क्यों चलती है? तो कहता है कि जो मेरा नूडल है स्पेशल है, मैं उसमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट डालता हूँ. तो उससे हमेशा पूछता रहता है. फिर वो मूवी के लास्ट में बताता है, वो कहता है कि स्पेशल क्या है.
तो उसको एक खाली वो दिखाता है कि स्पेशल कुछ नहीं है। स्पेशल बस मेरा बिलीव है, मैं इसको कहता हूँ कि ये स्पेशल है इसलिए स्पेशल है। तो मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, मैं GNDU से मैंने बीटेक पास आउट किया है, मेन कैंपस यूनिवर्सिटी से 2014 में। मेरी क्लास में 25 बच्चे थे और सर ये एकदम फैक्ट है, मेरा जो रैंक था क्लास में 25th है, माई रैंक वॉज 25th। जो मेरी CGPA है वो बताने लायक नहीं है, बट उसकी वजह से मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। और मैं उस टाइम भी ये सोचता था कि मतलब ठीक है मैं इसमें नहीं कर पाया, ऐसा नहीं है, अगर आप लोग कर पाओ एकेडमिकली कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। इस बार मैंने मेहनत की है थोड़ा सा और अच्छा है मेरा इस बार का MBA में परफॉर्मेंस। तो आप लोग जरूर एकेडमिकली को बिल्कुल आप लूज मत करना, क्योंकि अगर मतलब उसके मुझे कहीं कहीं लगा है कि अगर मैंने उसमें और अच्छा किया होता तो कुछ और अच्छा होता। तो आप यहाँ करो, लेकिन आपको ये बिलीव होना बहुत जरूरी है कि हाँ मैं कुछ करने के लिए आया हूँ, मैं कुछ स्पेशल करूंगा। अब जब कभी इंटरव्यू में बैठोगे तो आपके कॉन्फिडेंस से इंटरव्यूअर को लगना चाहिए कि हाँ ये लड़का जो प्रॉमिसिंग लग रहा है ये तो कुछ करके दिखाएगा मुझे, ठीक है। तो बी कॉन्फिडेंट, बी अवेयर, हार्डवर्क का तो कोई शॉर्टकट ही नहीं है, ठीक है। और अपना नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, बहुत लोगों से मिले, बातें करो, कभी कोशिश करो अकेले कहीं जाओ घूमने फिरने, ठीक है। तो अपना जो आपका जो लाइफ के लिए जो डर है उसको खत्म करो, ठीक है। और जो है आपके पास तो बस आप सब ना आप लिंक्डइन पे करो, मुझे भी ऐड कर सकते हो, मैं लिंक्डइन पे हूँ मनीष झा, WFP मनीष झा WFP लिखोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। मनीष झा WFP, MANISH मनीष JHA झा, WFP से लिखोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, आप उस पर करो आओ, और मैं आपको इवन उस पर फर्दर और भी कुछ अच्छा अगर मुझे मिलेगा तो आपको गाइड करूँ। आगे मैंने ये किया था तो हमारे स्टूडेंट भी आपको वही बताते हैं जो हम बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सीखी हमसे सीखा है। ठीक है, मैंने कोई सिखा के लाया, मैं इसको बस प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन से लेके आया हूँ, सर से हुनर करवा के, तो मैं जस्ट आपके पास आया उसको उसी टाइम बताया यार कि 5 मिनट एड्रेस करना मेरे बच्चों को। ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड, और आपको सीखे आके इसके कॉन्फिडेंटली, और ही हैज बीन ऑनर्ड बाय यूपी चीफ मिनिस्टर आल्सो, योगीनाथ आल्सो। तो ये उनके साथ ही बैठते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, उनकी प्लान्स एवरीथिंग, और जितने उनके DSP DIG हैं उसके अंदर है, ठीक है। तो यू कैन अचीव इन MBA दिस थिंग आल्सो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। Just on that note, we're going to end the session over here. We'll continue with the topic tomorrow, right?